अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड अ लॉट टू टॉक अबाउट बिकॉज इंग्लैंड का दौरा जो है वो इट्स राइट एट द कॉर्नर। क्या अपडेट्स हैं उसके हवाले से, साथ ही साथ फीफा वर्ल्ड कप 2022 इज़ हैपनिंग और उसके हवाले से भी डिस्कशंस एंड अपडेट्स यहाँ पे मिलती हैं। एंड अदर देन दैट क्या फुटबॉल की एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में हो रही हैं, क्योंकि एट लास्ट हम वापस अपने ट्रैक पे आना शुरू कर रहे हैं। उन सारी चीज़ों के हवाले से होगी हमारी डिस्कशन। एक गेस्ट भी हमें ज्वाइन इन करेंगे और बहुत सारी डिस्कशन यहाँ होने वाली है। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। यस, इस वक्त इंटरनेशनल जब फीफा वर्ल्ड कप हो रहा होता है तो वाकई उस वक्त द क्रेशेंडो एंड द नॉइज़ अबाउट द ग्लोबल स्पोर्ट्स मेरे ख्याल से इसका कोई मुकाबला नहीं होता। और कल जो फीफा वर्ल्ड कप को एक ज़बरदस्ती किक मिल गई है विद दैट ह्यूज अपसेट सऊदी अरेबिया का ओवर अर्जेंटीना, उसके बाद से बहुत सारे लोग जो शायद अभी भी अपने आप को बचाते फिर रहे थे फीफा वर्ल्ड कप से, अब देखने को हो गए मजबूर। बल्कि इनफैक्ट अब से थोड़ी देर पहले भी एक मैच हुआ है जिसको आई वुड कॉल इट अ मिनी अपसेट। ओके, मैं मज़ीद तफसील में नहीं जाऊंगा, सवेरा की जानिब में चला जाता हूँ व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स के साथ। सो ओवर टू सवेरा। बिल्कुल जी। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स क्या है आज की ताज़ा तरीन खबर क्या हो रहा है, क्या अपडेट है। पहले अगर हम बात करें इंग्लैंड ने जो दौरा पाकिस्तान करना है उसके हवाले से, तो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी जो हैं वो इस्लामाबाद रिपोर्ट करेंगे और वो खिलाड़ी जो है वो कल इस्लामाबाद रिपोर्ट करेंगे। कौमी स्क्वाड की बात करें तो कौमी स्क्वाड 25 नवंबर से पिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग का आगाज़ करेगा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम 27 नवंबर को सुबह इस्लामाबाद पहुँचेगी। अभी इस वक्त यूएई में मौजूद है इंग्लैंड की टीम और वहाँ ट्रेन कर रहे हैं वो। पहला टेस्ट यकम दिसंबर से पिंडी में शुरू होगा और पीसीबी ने एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को कल डिनर पर बुलाया। वाह क्या बात है। इसके साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग, while the series will be on, you will be hearing a lot about Pakistan Super League as well, because पाकिस्तान सुपर लीग के लिए जो ड्राफ्ट की, जो प्लेयर्स के ड्राफ्ट है उसकी डेट की बिलाखिर ऐलान कर दी गई है। देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, कराची में होना है, पिंडी में होना है, मरी में होना है, यहाँ होना है, वहाँ बहरहाल जी नाउ इट हैज़ बीन डिसाइडेड कराची इज़ द वेन्यू जहाँ पे 15 दिसंबर को PSL 8 का ड्राफ्ट होने वाला है। टूर्नामेंट डायरेक्टर उस्मान वाला ये कहते हैं कि ड्राफ्ट की तारीख का फैसला तमाम फ्रेंचाइज की रजामंदी से किया गया है। बेहतरीन खिलाड़ियों की दस्तियाबी के बाद PSL 8 एक अच्छा टूर्नामेंट होगा। PSL का 8वां सीज़न याद रहे 9 फरवरी से इसका आगाज़ हो रहा है, 19 मार्च तक चलेगा। कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में ये मैचेस खेले जाएंगे और याद रहे कि दिफाई चैम्पियन लाहौर कलंदर अपने एजाज़ को डिफेंड करेगी। बिल्कुल जी। और बहुत सारे जो हैं वो प्रॉमिसिंग प्रॉस्पेक्ट्स हमें दिख रहे हैं। ड्राफ्ट में बहुत भारी भरकम नाम भी सुनने को मिल रहे हैं कि वो आ रहे हैं। सो कौन कौन से नाम सामने होंगे, ड्राफ्ट में क्या शक्ल सामने आएगी टीम्स की, वो हमें जल्दी पता चल जाएगा जब ऑब्वियसली ड्राफ्ट जो है वो करीब आएगा। मूविंग ऑन फर्दर, और फीफा जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप 2022 इस वक्त जारी है कतर में, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। साइड लाइन्स पे बहुत सारी स्टोरीज भी हैं बिकॉज ऑब्वियसली एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट कतर इज़ होस्टिंग दिस बिग इवेंट, जितनी इन्वेस्टमेंट कतर ने की है, बट उसके साथ साथ जिस तरह वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन पे दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट एंड वाई नॉट, बिकॉज आप कहीं जाते हैं और अपने उस कल्चर को फॉरवर्ड करते हैं, सो वाई नॉट। ऑब्वियसली ग्लोबल नहीं हो सकता हर कल्चर। तो बहुत सारी साइडलाइन स्टोरीज तो आई रही हैं, बट इस वक्त अगर हम मैचेस की अपडेट्स की बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप में दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। आज होने वाले पहले मैच में मराकश और क्रोएशिया का मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर रहा। दूसरे मैच में जर्मनी का मुकाबला जापान से होगा और उसके बाद तीसरे मैच में स्पेन की टीम कोस्टारिका के सामना करेगी। फिर चौथे मैच में बेल्जियम और कनाडा जो है वो टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। कल होने वाले मैचेस में सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को जिस तरह 2-1 से शिकस्त दी थी, इनफैक्ट सऊदी अरब ने जो है वो आम तातील अनाउंस कर दी है। अब जब भी ये दिन आया करेगा तो आम तातील हुआ करेगी सऊदी अरेबिया में। दिस वाज द इंटेंसिटी, दिस वाज द लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस दैट सऊदी अरेबिया हैड अर्जेंटीना को हरा के। ऑब्वियसली द मेसी टीम और कितने बहुत सारे, मैं और भी आगे इस पर वैसे बात करूँगी कि सऊदी फैंस आए हुए थे जिन्होंने सऊदी किट पहनी हुई थी बट पीछे मेसी लिखवाया हुआ था, कितने खुश होंगे वो। साथ ही साथ जो है डेनमार्क और ट्यूनीशिया, मेक्सिको और पोलैंड, इन दोनों का मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। दिफाई चैंपियन फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से आउट क्लास किया। एब्सोल्युटली। सो इट वाज दैट अभी थोड़ी देर पहले जो मैच खत्म हुआ है जस्ट एंडेड बिटवीन मोरक्को एंड क्रोएशिया, 0-0 से बराबर रहा।
And I really feel that these are 2 points lost by Croatia. Croatia पिछले FIFA World Cup की finalist team थी. So well done to Morocco. They held a very, very talented Croatian side to a goalless draw. अब कुछ बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हवाले से. ऑफ कोर्स इस फीफा वर्ल्ड कप के अगर किसी से भी पूछे कि 2 बड़े स्टार्स कौन से हैं, पीपल विल से मेसी एंड रोनाल्डो. दुनिया फुटबॉल के ये 2 बड़े खिलाड़ी अपने करियर्स के आखिरी वर्ल्ड कप में शिरकत कर रहे हैं. लेकिन ऑफ कोर्स आप जानते हैं वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उनके क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के दरमियान एक कंट्रोवर्सी आ गई थी. पियर्स मॉर्गन को एक बड़ा सनसनीखेज इंटरव्यू दिया क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, जिसमें उन्होंने बड़े खतरनाक किस्म के इल्ज़ामात लगाए अपने क्लब के ऊपर. और फिर हुआ क्या, हुआ ये कि उसी वक्त समझ में आ गया था कि अब इन दोनों की राहें हो जाएंगी जुदा. नाउ दिस हैज़ बिकम ऑफिशियल. क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज़ नो मोर अ पार्ट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड. उनका जो ये दूसरा स्टंट था विद द क्लब हैज़ कम टू एन एंड. पहला तो उनका बहुत कामयाब रहा था. दैट एक्चुअली was the time that made Cristiano Ronaldo popular all around the world. जो उनका पहला टाइम उन्होंने सर एलेक्स फर्ग्यूसन के टाइम पे यूनाइटेड में गुजारा था. लेकिन इस बार इट वाज वेरी शॉर्ट एंड ब्रीफ. 1.5 साल भी सर्वाइव नहीं कर सके. पिछले साल अगस्त में यूवेंटस से मूव हुए थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मैनचेस्टर यूनाइटेड आए थे. पहले सीजन में गोल भी स्कोर किए, असिस्ट भी किए. लेकिन जो चेंज ओले गुनार सोल्शायर की जगह जब एरिक टेन हाग आए तो उनके साथ इनकी बिल्कुल भी नहीं बनी. सो बिलाखिर खुदाफिज का मैसेज कर दिए गए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो. द स्टोरी इज ओवर एंड ऑल्सो ओवर इज आर व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स. बिल्कुल जी, व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स के यहाँ पे होता है अख्ताम. एंड अदील, अगर मैं बात करूँ आपके, क्या मेन्यू के बहुत सारे फैंस जो हैं वुड दे शिफ्ट विद रोनाल्डो? ये बड़ा मज़ेदार सवाल है. और मेरे लिए भी ये कि आई हैव नेवर लाइक्ड रोनाल्डो, वेरी फ्रैंक. आज मुझे सुबह किसी ने शो में पूछा था कि आपका सबसे आपका कौन सा प्लेयर आपको पसंद नहीं है. मैंने कहा मुझे रोनाल्डो नहीं पसंद, पता नहीं क्यों. Why not? I don't know. I mean, मुझे उसका कुछ तरह एटीट्यूड का प्रॉब्लम मुझे लगता था बहुत ना. वो उसको लाइमलाइट चाहिए और उसको गोल करने. तो वो कभी कभार बड़ा अनफेयर खेला है अपने. बाकी आई थिंक he could have, his teams could have achieved a lot. Portugal could have achieved a lot. मैच अगर ये रोनाल्डो थोड़ा कम सेल्फिश होता. लेकिन खैर But he's been so active in as being a philanthropist. और जिस तरह वो एक अलग बात है. वो बिल्कुल बहुत सारे और लोग भी हैं जी. मैं उस मेसी वर्सेस रोनाल्डो ऑनेस्टली उस डिबेट में मैं ऑनेस्टली नहीं पढ़ता. लेकिन अगर आप ये बात करती हैं, जब ये मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़कर गए थे एंड मूव टू रियल मैड्रिड, उस वक्त ये सवाल पैदा हुआ था कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू दीज फैंस. अच्छा, मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि जो क्लब की आप लॉयल्टी होती है ना, वो स्टिक करती है, वो रहती है. वो इतने आराम से अगर आपका पसंदीदा प्लेयर भी छोड़ के चला जाए तो रियल मैड्रिड, अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन दैट आई नो दे बिकेम फैंस ऑफ रियल मैड्रिड बिकॉज रोनाल्डो वाज प्लेइंग फॉर देयर. लेकिन मैंने उनको इस तरह यूवेंटस को सपोर्ट करते हुए नहीं देखा जो उनका अगला क्लब था रियल के बाद. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो क्लब लॉयल्टी है ना, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. सो यू कैन लाइक रोनाल्डो and Real Madrid or Manchester United at the same time, irrespective of wherever Ronaldo is playing. That's what I think. बिल्कुल. सो अब ये देखेंगे कि मेन्यू क्या फैन शिफ्ट होता है कि नहीं होता. वैसे आई टोटली अग्री टू द फैक्ट दैट क्लब्स को जो ओन कर रहे होते हैं, जो फैंस ओन कर रहे होते हैं, वो बहुत ही डेडिकेटेडली ओन कर रहे होते हैं. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फुटबॉल, और जब हम ये बात करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान फुटबॉल भी जो है वो स्ट्रीमलाइन पे आ रही है. खुदा करके जो है हमारा बैन हटा, नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनी और व्हाट नॉट, बहुत सारी कहानी हुई बैकग्राउंड में. बट इवेंचुअली नाउ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, दे आर कमिंग इन स्ट्रीमलाइन. बट विद दैट और भी बहुत सारे फुटबॉल एंथुजियास्ट हैं और बहुत सारे फुटबॉल को सपोर्ट करने वाले हमारे पास क्लब्स हैं जो लीग्स भी कराते हैं, जो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ बेहतरी हो फुटबॉल की. सो ऐसे ही एक जो है एक पूरा एक प्लान आउट किया गया एंड फीफा की रेफरी को साउथ अफ्रीका से इनवाइट किया गया स्पेशली टू विजिट पाकिस्तान फॉर करियर मेंटरशिप एंड अ प्रोग्राम फॉर स्पोर्ट्स एंड द फुटबॉल रेफरिंग. तो वो उनको इनवाइट किया गया और आज हमने मौका ढूंढा और हमने उनको अपने पास इनवाइट किया. सो अखोना मकालिमा हमारे साथ जो हैं वो मौजूद हैं. सो वेलकम टू गेम सेट मैच अखोना. Good evening. How are you doing? I'm fine. Hope you're doing fine as well and enjoying Lahore. Akhona, how have you found Pakistan's football setup up till now?
How do I find what? Pakistan's football setup. How do I find the football setup in Pakistan? Is that Yes. the question? Yes, that's the question. Your communication is a little bit scratchy. Okay, we need to fix that. Definitely fix that. So, We can hear you, but yeah, Akhona, we can hear you well. Yeah. You can hear me very well. Maybe There's some. There is some issue. अभी अखोना को हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. I think it will be a very interesting conversation, सवेरा. एक तो पाकिस्तान फुटबॉल का जो इनका है, ज़रा सा इनकी भी अपने जर्नी के बारे में हम सुनेंगे. ख़वातीन रेफरिंग में जनरली बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती हैं. और कल के मैच में बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था जो फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया का था. The fourth official was actually was a lady from Rwanda. अगर मैं गलती पर ना हूँ तो ये दोनों जो है इनसे ज़रा इनके बारे में भी पूछेंगे कि ये how does she look at this thing and why she is here in Pakistan and also And then Adil, to our surprise, because मैं शायद almost एक साल पहले जो है वो कोयटा गई थी to cover T20 cricket for women. और वहाँ मुझे सोनिया मुस्तफ़ा हमारी एक एक्स प्लेयर होती थी जो कि काफ़ी पाकिस्तान फुटबॉल में एक्टिव थी. बट जब ये फीफा बैन और ये सब कुछ हुआ, so she thought कि उनका करियर यहाँ पे रुक जाएगा. So she is an approved FIFA referee, जो कि जिन्होंने अपनी लाइन ये आगे further वो की. And Akhona, I hope you can hear us now. loud and yeah, I'm so happy. Thank you. So glad to hear that. So how did you find the football setup here in Pakistan? I know it is just on its initial levels now. We are restarting, but how did you find it? So far, so good. Obviously, you are still on your teething phase, which is something that is not really bad. With the few encounters and the young girls that I've met up with, I can see a very good development, but it still needs to be nurtured and trained. But everything is promising. Where there is a promise, I think we can still water something, and there is a good seed that can blossom. So, Akhona, when we talk about women moving on further, women going further, because obviously you'd be aware of Pakistan Football Federation being banned by FIFA, and now we have just started resuming back. We are just collecting all the team together. We're just trying to work it out and then start competing in the world again. So do you see inspiring young women entering into Pakistan football, and how important do you feel it is for a society? Absolutely. If there is a young girl who can run, if there is a young girl with full potential, absolutely there is no way that we cannot get 1 or 5 referees in Pakistan. But like I said, we still need more development structures, and obviously where there is a woman, there's still hope. So I see very good potential. You can see the fire, the drive and the passion from all the young women that I've met this morning. So I believe that one day Pakistan will have one girl participating in the highest standard of football. Definitely. How would you define your journey, Akhona? Because when I talk about FIFA referees, there's not a lot of female referees that I have seen, that I have witnessed. How was your journey, and how did you deviated yourself towards being a referee? My journey has been a roller coaster. Obviously, it has its ups and downs, and it has, you know, the highs are high, your lows sometimes they are low. And also, even in my country, I had to penetrate a space where it was then dominated by men. So I had to introduce myself in a space positively, bravely, and also I needed to position myself in a sense that I want to be in a world that was not dominated by women at first. So I needed to sharpen my skill, I needed to train harder, and also I needed to also guide myself against all the negativity that comes with the social media, and also I needed to turn down the volume of negativity when it comes to undermining women, doubting women, and also we had to constantly teach the society that women
are there, and also we are part of the society. We form the society, and therefore when we deserve to be given opportunities, and when we are given opportunities as women, we need to use those opportunities wisely, and we don't need to take them for granted. When we are given a seat in the table, we need to sit and be vocal in the table, and when we sit, we need to compete, and when we compete, we open doors for other women. So that has been my journey, and I continue to do that. The lows are lows. Guys or men in their sport, they will forever bash you, they will forever throw all the negativity. But when you stand firm in who you are and what you believe in and the skills and talent that you have, nobody can bring you down. Akhona, I can so relate to that, whatever you have said. Over to you, Adil. Okay, no, thank you so much. I try to be a very good man here. Sawera would testify for that. But Akhona, yesterday during the match between Australia and France, I mean, we saw this very beautiful scene when the fourth official was a female from your continent, from Rwanda. I wrote her name, Salima 100%. Mukansanga, if I have pronounced it correctly. Yes. Mukansanga. So, how big? I mean, how big a thing this is for I'm not just talking about refereeing or anything, but for women in sports. It talks about, you know, constantly throughout the week I've been saying impossibly is nothing. So when you keep saying that there is absolutely nothing impossible in this world, I remember back in the days when I started refereeing and I said to myself, one day I will officiate the men's tournament, the Women's World Cup, and people were like, no, she's daydreaming, that will never happen. You will never see any woman in the Men's World Cup. But guess what? Just at this World Cup, we have 6 women representing all other women that are match officials in the country. And also, I don't think they are only representing match officials, they also representing any woman who dares to dream, any woman who dares that they want to change, they want to take up space. It's just a dare. If you want to take up space, just look at those 6 women that are representing all of us. When they are there, they are no longer representing themselves, but they represent all of us who believe and who dare. And like I said earlier on, impossible is nothing. I'm saying this with a sense of pride to see another woman winning. So when they win, we all win. Definitely, we all win. And as you have said, impossible is nothing. So something not impossible was done yesterday by Saudi Arabia beating Argentina. How do you look at that match? I am saying bravery. In any sense of sports, it's all about the bravery, the mindset, and the zeal to fight to the last end. You commit, you dominate, and then who knows, you will shock the world. It's all about that. You see our young girls, this is exactly what they are doing. We're still shocking the world. So, Akhona, are you missing not seeing the Bafana in the FIFA World Cup? Why are you saying that? I have Victor Gomez, Zageleswela at the World Cup. Brilliant. So my brothers in the whistle, they are there. So I'm not missing anything. So also let me know, like for any footballer, there is always a favorite footballer. Like before we took you on air, we were having a discussion about the Messi versus Ronaldo and stuff. So did you do the referees have a favorite referee as well? Okay, can you name someone? An inspiration, someone who became the inspiration. Gianluigi Colina, I think is the one, a very popular one that I recall. Yes. So tell us about your favorite ref. My favorite guy is Papa Kasama, Africa's #1. So he's the guy that I'm looking forward to watch at this World Cup. Victor Gomez is my brother. He's very close to me. He's like my mentor to me. So I look forward to those games. Yesterday he was doing a game. He was handling the France game. So yes, I have those people that I look up to. Then also the thing, I'll be very biased to say I have these only 2 because I also have Sigazwe. We know referees, they have different traits and different qualities. So you gain different qualities from each and one of them. But I look forward to Papa Kasama. He's my guy. Akhona, something very important. What message would you want to give to the Pakistani girls and women coming forward towards this sport, because this sport has been really fragile in the recent past, and now that we are coming back, what message would you want to give to all those young girls?
what message I would love to give to the young girls in Pakistan and all women is that do not be afraid to take up space and do not be afraid to be the only one. And why must you fit in while you can be the only one doing it? But with everything, it comes with discipline, dedication. And when you set goals realistically, set realistic goals and break them down. And everything is possible in this world, but write your dreams down and work, have a roadmap towards your dreams. Have a time frame, because you can achieve anything. It's all up in your mind. And if you feed your subconscious mind with positivity and growth, believe me, you will grow. But nobody's going to do it for you. Nobody's going to do favors for you. You have to do it yourself. You have to do yourself a favor. Get up and work hard. And the rest is history. Get up and work hard is a beautiful thought for sure, Akhona. Yes. Akhona, just a little bit about your country. I mean, Pakistanis, of course, can associate a lot with South Africa. It's the cricket relationship that we have with the country. Tell us about the. We beat you all the times. We beat you all the times on cricket. Do you want us to discuss about that? We beat you all the time. We just beat you. Sometimes. This discussion is just getting into a very, very wrong direction right now. But Akhona, tell us about the sports scene in South Africa. Like we know that South Africans, Springboks, are excellent. They're a brilliant rugby team, and we also believe, and if I assume that rugby is the most popular game there in South Africa. Tell us about the soccer scene and the cricket. Where do they rank after rugby? After rugby is going to be cricket. After cricket, maybe it's going to be what? Maybe after cricket, it is going to be netball. All right. But our football, maybe our football is going to be me and Gomez. All right. After cricket, maybe it's going to be me and Gomez. But the rugby, absolutely, they're doing very well. Our rugby team is doing very well, and our cricket guys are doing absolutely good. And we still have a room of improvement for our football. Yeah. So was this the only sport that you started off, or did you shift here and there with these sports? Pardon? Was this the only sport that you started off, football, or did you shift your sport over the period of time of your life? No, I started off doing athletics. I did athletics for the number of years. So I'm coming from a rugby community. I started playing rugby before I played football. So I was then introduced to football later, and then I had to choose between rugby and football, and then I chose football. And what made you shift that? Like, what was your point of choosing? Why not rugby and why football? Because in football I was very special. I'm left-footed, so I'm a left footer. So I was a left winger, and it was something very special. And I was very accurate with my left footer. So that is why I chose that. I was this special young girl that was left-footed and very skillful. But unfortunately, I come from disadvantaged backgrounds. I could not make it to the to the national team, and this is why I'm also in Pakistan, so that we can open opportunities and also assist the Galaxy Sports to bring all the opportunities. That one day, whoever wants to play for the national team, they get those opportunities. Absolutely. Definitely. I mean, the referees have to be super fit as well. I mean, running from. I think the main referee during the game, he ends up running the most. I really don't think even the striker or anyone, a midfielder, runs as much as the ref do. So tell us about your fitness regime and what are the exercises that you go through. Is your training as tough as any player that goes through? And how much does FIFA take care of that? Our training is a mixture of speed agility, speed endurance, speed long speed ability, and more agility and repeated speed ability. So it's all about that. Lots of changing of directions, and also you need to be very quick on the spot, and also your endurance means a lot. You need to train yourself technically also as well, because you need to analyze your matches and everything. And also your fitness must be on the highest, because like you have said that we need to run the entire field.
some match officials, they run 13 up to 15 kilometers a game. Wow. So that can tell you something, that the game is very fast. And I'm sure there are other ones that can even run more than that, particularly at the World Cup. I'm sure there is a referee that can run more than 15 kilometers at the World Cup. And Akhona, what about the use of technology? I mean, we have seen that, I mean, because cricket is the go-to sports for Pakistanis, we've seen that cricket happens to be actually a very open-minded sport towards embracing technology. I mean, the decision, what you call the DRS, has been there. It has matured over the past many years. The third umpire was brought in decades back and all. We have seen that football had been slow to adopt things like VAR and perhaps the goal line technology. How do referees look at that? Because I think the opinions are divided. Some say that yes, it's a pretty useful addition to the game, but some say that this has taken the natural flair away from the thing, and these wrong decisions were an integral part of the football itself. What do you say about that? I am saying that people must be open-minded to change. Change is a beautiful thing, but you cannot appreciate change if you are not open-minded about it. Yeah. When something is done well, when we can practice VAR well, when we can give VAR and understand VAR, then we will understand that it is a beautiful tool. VAR is not here to slow the game down. VAR is not here to change anything, not to take away anything from football, because we referee as if there's no VAR, and then technology will come when there is an obvious error, and then it will assist. But otherwise, if ever we can be open-minded to the change and understand what is the role of VAR, when does VAR intervene, and then we will understand that it's a beautiful tool, but we need to give it some time and understand it. You will never understand something if you are not open-minded and you don't have a positive mind about it. You will forever criticize it until you have an opportunity. You teach yourself, you listen, and you understand what is it for, how can they intervene, and then you will understand that it's a beautiful tool. Yeah, brilliant. Definitely, that's promptly said. And just lastly, Akhona, are you enjoying Lahore, enjoying the food and everything? I mean, I'm really enjoying Lahore. Obviously, the city of garden, the city is beautiful, with beautiful and amazing people around. And I'm working with an amazing bunch of women, and also my sister Rabia, that I am here because of her. Obviously, the reception is amazing, and also moving around the university, get to know people, exchanging cultures, exchanging everything. It is really amazing. And also exchanging our wisdom and our knowledge with the young girls. They learn from us, and also we are learning from them. So I am really enjoying Pakistan. This is my second time in Pakistan, and I know I will come back in Pakistan because we really have a long relationship with Pakistan and my sister Rabia, and together with the Galaxy Sports. So Galaxy Sports is home for me, and this is where I belong. And me and Rabia, we are sisters. So sisterhood, you cannot decide that today we are not sisters. We are sisters today, we will be sisters tomorrow because we were sisters yesterday. And we also have other sisters. We have over 186 brothers and sisters in over 58 countries in the entire world. So this union is really growing. And also me and Rabia, we will also go to other countries to assist other women to grow this game of football and also other sporting codes, as long as it involves helping another girl to participate in sports and taking up space and make it to their full potential. We will forever do it. That is Brilliant, amazing. Akhona. Akhona, wishing you all the very best for the rest of your stay in Pakistan, and we look forward to seeing you again, not just in Pakistan, but in our show as well. Thank you so much for taking out time for Game Set Match on SAMAA TV. Thank you, Akhona, and good luck with all the future endeavors much that you'll do. Thank you so much for having me. Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. Thank you, thanks a lot. It was wonderful discussions. And वही मैं कहती हूँ ना अदील, ये जो फुटबॉल एंथुजियस्ट हैं, मेरा ख्याल से पाकिस्तान में तो अभी तक अगर अफलोट कर रही है कहीं ना कहीं फुटबॉल, it's because of them. Because Pakistan Football Federation तो eventually अब फिर से in working. Pakistan Football Federation जो became more of a joke or anything, जिस तरह पाकिस्तान में फुटबॉल को मैनेज किया गया है, but
The moment you get into the second tier cities and in the rural areas और पाकिस्तान even अगर आप first tier city के भी अगर आप थोड़े से पसमानदा इलाकों में जाएंगे आपको अंदाज़ा ये होगा that football perhaps is more popular than cricket. Exactly. यही सिलसिला इंडिया में है, यही सिलसिला बांग्लादेश में भी है. फुटबॉल गेम की कशिश ऐसी है, कोई किट नहीं, कोई बैट नहीं, सिर्फ एक बॉल चाहिए होती है, just start playing. So Pakistan is blessed with so many enthusiasts. I really hope कि हम अपने वो कहते हैं ना कि इस टैलेंट को जो है वो नर्चर कर पाएं और उसको जो है वो हम एक जगह पे चैनलाइज कर सकें. और बहुत सारा रॉ टैलेंट है, बहुत सारे क्लब्स हैं, बहुत सारे इनफैक्ट हम अपने नदर्न एरियाज में जैसे ही बढ़ते जाएं जाते जाएं आपको जितना वहाँ पे फैन फॉलोइंग फुटबॉल की दिखेगी बिल्कुल क्रिकेट की नहीं दिखेगी. बट वक्त यहाँ पे हमारे एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान का कौमी खेल क्रिकेट पे भी हम बात करते हैं, फुटबॉल पे भी बात कर रहे हैं, मगर हॉकी पे बात करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज कहीं ना कहीं मसले में फंसता है पाकिस्तान का कौमी खेल और उसके बाद निकलने की कोशिश करता है, एक और मसले में फंस जाता है. ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं. And welcome back to Game Set Match. We were in conversation with Akhona Makalima जो कि स्पेशली पाकिस्तान आई हैं, फीफा की रेफरी हैं और पाकिस्तान में मेंटोरशिप प्रोग्राम के साथ जो हैं वो कुछ किसी इवेंट के लिए मेंटोर करने के लिए, करियर मेंटोरिंग के लिए यहाँ पे मौजूद थी और उनसे डिस्कशन हमारी हुई एंड बहुत मज़े की, एक बहुत अच्छी डिस्कशन बिकॉज ऑब्वियसली पीपल आर मूविंग फॉरवर्ड एंड वर्किंग फर्दर. जेंडर के ऊपर बड़ा ये काम हो रहा है कि नहीं जी फीमेल्स भी जो है वो आगे बढ़नी चाहिए अलग अलग स्पोर्ट्स में और फुटबॉल के लिए अखोना इज़ वर्किंग विद पीपल हियर इन पाकिस्तान एज वेल. सो उनसे काफ़ी अच्छी डिस्कशन हुई. बट जब पाकिस्तान हॉकी की बात करते हैं, पाकिस्तान हॉकी में एक इशू हमने कुछ दिन पहले आपसे शेयर किया था विच वाज नेशंस कप. नेशंस कप में जाना एक मसला एक मुसीबत हो गई थी पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए एंड हमने देखा जिस तरह पाकिस्तान टीम के हेड कोच जो हैं उन्होंने भी जिस तरह अपील की कि जी फंड्स आने चाहिए. इवेंचुअली खबर ये आई कि हाँ जी फंड्स तो आ रहे हैं मगर फिर वो फंड्स अभी तक ना ऑन पेपर हैं, सिर्फ कहते हैं ना सिर्फ अभी वर्बली सारी बात हुई है. बट क्या अपडेट है क्या नहीं है खिजर से जानते हैं. जी बिल्कुल सवेरा, जिस तरह वो एक मिसाल दी जाती है ना कि आसमान से गिरे खजूर में अटके, तो पाकिस्तान हॉकी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि पाकिस्तान हॉकी का जो स्क्वाड है वो तैयार है, मैनेजमेंट भी तैयारियों में लगी हुई है. पाकिस्तान हॉकी ने पहला मैच जनूबी अफ्रीका में खेलना है, मेज़बान जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ 28 नवंबर को. तो गुज़िश्ता रोज़ हमने ये कहा था, आपसे अपडेट भी किया था नाज़रीन को कि जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है उसने यकीन दहानी करा दी है 70 लाख रुपए तक की रकम और फिर बाद में उन्होंने कहा कि जो टिकटिंग वगैरह का जितना भी खर्चा है वो उठा रहे हैं. तो अब तक जो है कोई मौसूल नहीं हुआ और आज जब हमने रब्ता किया तो सवाल जब हमने किया कि उसका वो स्टेटस कहाँ तक पहुँचा तो जवाब ये मिला कि समरी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से मिनिस्ट्री तक जा चुकी है और दस्तखत की मुंतज़िर है, जो कि वज़ीर हैं वफाकी वज़ीर एहसानुल्लाह मज़ारी, उनके दस्तखत की मुंतज़िर है, जिसके बाद जो है वो फर्दर प्रोसेस शुरू होगा. मगर वो इन तमाम तर हालात में वो जो एक हमारे यहाँ एक सोसाइटी में एक वर्ड है कि जुगाड़, तो वो जुगाड़ के तहत जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो अपने तमाम तर प्लेयर्स को आज रात जनूबी अफ्रीका के लिए रवाना कर रही है. मगर मैं आपको ये बताता चलूँ कि अफसोसनाक बात है कि 2 हिस्सों में जो है ये स्क्वाड है वो जा रहा है पाकिस्तान हॉकी का. आज कुछ खिलाड़ी चले जाएंगे और कुछ खिलाड़ी कल जाएंगे और उसकी वजह यही है कि जो फ़ंड्स के इंतज़ामात थे उसमें देर हुई है. मगर फ़िलहाल कहना यही है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के तहत पाकिस्तान हॉकी टीम जा रही है. फ़ंड्स की यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं मगर अभी तक कुछ मौसूल नहीं हुआ है. तो ये सिचुएशन है. अब नेशंस कप में अब पाकिस्तान टीम ने परफॉर्म करना है. प्लेयर्स यहाँ से जा तो रहे हैं मगर वही वाली बात है कि जो स्टेप बाय स्टेप जो जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है खिलाड़ियों को कि वो कैंप में आ जाते हैं, कमिटमेंट हो जाती है कि हम टूर्नामेंट में शिरकत करेंगे, मगर उसके बाद एक तलवार लटक रही होती है. वो तलवार यकीनन फ़ंड्स की तलवार है. तो एक मैकेनिज़्म यकीनन बनाने पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देना होगा कि एटलीस्ट नेशनल गेम को उस तरह से ओन किया जाए कि जिस तरह से नेशनल गेम हमें रिटर्न कर देता है. और जब भी हमने देखा कि माजी में जिस तरह पाकिस्तान हॉकी तमगे, मेडल्स और ये सब चीज़ें लेकर आती थी, अब क्या उस पोजीशन पे वापस आ सकती है
यकीनन हम बहुत दूर हैं, मगर उसके लिए थोड़ी अहमियत देनी होगी। ज़ाहिर है, देखें ये तो रोना ही यही है जो आप मैकेनिज़्म की बात कर रहे हैं। मसला मैकेनिज़्म तो तब बनेगा जब आपके पास फंड्स की श्योरिटी होगी और आपके पास स्पॉन्सर्स होंगे एंड ऑल। ज़ाहिर है, आई थिंक अभी एक नई फेडरेशन में एक टीम आई है, इट्स गोइंग टू, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो भी इस वक्त फायर फाइटिंग अप्रोच पे ही चल रहे हैं, बिकॉज उनको भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, ब्रीदिंग स्पेस उनको नहीं मिल पा रही है। ये बताइए कि क्या ये टीम को आज सुबह रवाना होना था? हमें ये भी पता चला है कि अभी जो कल से 2 हिस्सों में जाएगी टीम, लेकिन एक्चुअली इनको आज सुबह डिपार्ट होना था, बिकॉज 28 तारीख को तो इनका पहला मैच है। बिल्कुल, आज सुबह 11 बजे की इनकी जो है वो टिकट्स वगैरह जो हमारी इतलात थी वो रेडी हुए हुए थे, मगर वही है कि फ़ंड्स और थोड़ा सा जो वीज़ा प्रोसेस में टाइम लगा है उसकी वजह से जो अब टीम है वो बजाय आज सुबह जाने के आज रात जा रही है। और तकरीबन 9 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स हैं जो कि आज चले जाएंगे और दीगर खिलाड़ी और ऑफिशियल्स कल रवाना होंगे। तो ये भी एक अजीब सी बात है कि हमने ये तो सुना था कि मुख्तलिफ मुल्कों में अगर कुछ प्लेयर्स हों, लीग्स में हों, तो वहाँ से होते हुए ज्वाइन करते हैं कैंप को, मगर हम ये देख रहे हैं कि एक कैंप से खिलाड़ी 2 हिस्सों में जा रहे हैं। तो बहरहाल यही इस वक्त पाकिस्तान हॉकी की कंडीशन है। आज सुबह रवाना होना था, तहम आज नहीं जा सकी क्योंकि वीज़ा प्रोसेस में और वो फ़ंड के मसाइल। तहम अब आज रात 11 बजे कुछ प्लेयर्स हैं जो कि यहाँ से कराची से ट्रैवल करेंगे जनूबी अफ्रीका के लिए, कुछ प्लेयर्स और ऑफिशियल कल ट्रैवल करेंगे। थैंक यू खिज़र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। एंड दिस इज़ सच अ सैड अफेयर कि पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान की नेशनल हॉकी टीम जो कि पाकिस्तान को हिट करने जा रही है एक इवेंट के लिए, उनको इस तरह भेजा जा रहा है जैसे शायद उनके ऊपर एहसान किया जा रहा है कि वो अपनी कोई लोकल कम्युनिटी या कहीं गली मोहल्ले की टीम को जो है वो रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। सो हमारी जो है वो अपील होगी दिफाई वज़ीर से, एहसानुल्लाह मज़ारी साहब से, कि बहुत जल्द ये सारी चीज़ें कर दी जाएँ। ये जो हिरारकी है, ये जो सिग्नेचर प्रोसेस है, जो चीज़ें कमिट की गई हैं वो कमिटमेंट जो है उनको पूरी की जाए कि वो टीम वहाँ पे एटलीस्ट फंड्स के बारे में ना सोचे, किस तरह परफॉर्म करना है उसके बारे में सोचे। बिकॉज टुडे इज 23 नवंबर, 28 को पहला मैच खेलना है हमारी टीम। तो वी नीड टू थिंक पॉजिटिवली, वी नीड टू बी फोकस्ड कि हमें किस तरह फैसिलिटेट करना है अपनी नेशनल हॉकी टीम को। आप अदील अगर आखिरी कोई राइट नहीं बिल्कुल, आई थिंक वी हैव सेड इनफ एंड आई रियली होप कि ये आखिरी बार ऐसा हुआ है कि इस तरह बेचारों को जो है ना, ये देखिए एक बार याद रखिएगा, इन कॉन्टेक्स्ट आपको याद रखना है कि टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए खेलना बहुत ज़रूरी था अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए, बिकॉज अगर हम नहीं खेलते we would have fallen to number 21 और 22 in international ranking और पाकिस्तान को 1.5 लाख यूरोस का जुर्माना भी होता, which now is a very big amount। जितने फंड्स इनको चाहिए उतने तो वो जुर्माना ही आपको लग जाता। बट अल्हम्दुलिल्लाह द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट द टीम इज ट्रैवलिंग थैंक्स टू स्पोर्ट्स बोर्ड के, अल्लाह करे इमदाद आ जाए, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। सो कुछ जीत कर भी आए वहाँ से, बिकॉज इसके बाद पाकिस्तान के पास FIH प्रो लीग में खेलने की अपॉर्चुनिटी भी आ जाएगी। एंड वंस यू स्टार्ट प्लेइंग इन द प्रो लीग, दैट्स व्हेन यू आर इन द बिग लीग। आप बहुत ज़्यादा मैचेस खेलेंगे और आपकी रैंकिंग भी इंप्रूव होगी। बहरहाल जी, अब से थोड़ी देर बाद फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी और जापान का मैच भी होने वाला है। इज देयर एनी सरप्राइज इन स्टोर? जर्मनी 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, बड़ी कंपेटिटिव फुटबॉल, बड़ी मैकेनिकल फुटबॉल खेलते हैं, कैसे डिलीवर कर पाएंगे? उसके बाद रात को 9 बजे स्पेन बामुकाबला कोस्टा रिका, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और रात में काफी सारे, रात 12 बजे काफी सारे लोगों की फेवरेट साइड वर्ल्ड नंबर 2 बेल्जियम will be in action against Canada, making their re-entry into the FIFA World Cup after many decades actually। तो फिर कल रिजल्ट्स लेकर भी आपकी खिदमत में आएंगे। एंजॉय वॉचिंग द फुटबॉल। अदील और सवेरा को इजाजत दीजिए, कल मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज।